CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 14, Miscellaneous Exercise. Question number 1. Write the negation of the following statements. First part, P, such that every positive real number x, the number x minus 1 is also positive. Negation होगा, there is negation means उसका नकारात्मक, नॉट वाला नकारात्मक शब्द. देखिए साइन ये है, P such that there exists a positive real number x such that x minus 1 is not positive. वहाँ पर था x minus 1 is also positive. अब नेक्स्ट देखते हैं. Second, Q such that all cats scratch. इसका नेगेशन होगा, there exists a cat which does not scratch. Third, or such that for every real number x, either x is greater than 1 or x is less than 1. इसका नेगेशन क्या होगा? देखिए नेगेशन का साइन. और सच दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट नाइदर एक्स इज ग्रेटर देन 1 नॉर एक्स इज लेस देन 1. फोर्थ, एस सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स सच दैट 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1. Negation of S such that there does not exist a number x such that 0 is less than x and x is less than 1. Now come to the question number 2. State the converse and contrapositive of each of the following statements. देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट है, P such that a positive integer is prime only if it has no divisor other than 1 and itself. The converse of the statement is, if a positive integer has no divisor other than 1 and itself, then it is a prime. Now the contrapositive of the statement is, if a positive integer has a divisor other than 1 and itself, then it is not prime. Now the next second part of the second question, that is Q such that I go to beach whenever it is sunny day. This can be also written as Q such that if it is a sunny day, then I go to beach. The converse of the statement is, if I go to beach, then it is a sunny day. Contrapositive क्या होगा? If I don't go to beach, then it is not sunny day. Third, or such that if it is hot outside, then you feel thirsty. Converse क्या होगा इसका? If you feel thirsty, then it is hot outside. Contrapositive क्या होगा? If you do not feel thirsty, then it is not hot outside. Question number 3. Write each of the statement in the form if P then Q. अब हमारे को नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट को if P then Q के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट है P such that it is necessary to have a password to log on to the server.
आंसर क्या होगा? इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, queue such that there is a traffic jam whenever it rains. इसका आंसर क्या होगा? If it rains then there is traffic jam. Third, or such that you can access the website only if you pay a subscription fees. इसका आंसर क्या होगा? If you can access the website then you pay a subscription fees. Now come to the question number 4. Rewrite each of the following statement in P, if and only if Q. First देखिए, P such that if you watch television then your mind is free, and if your mind is free then you watch television. इसका आंसर क्या होगा? If you watch television, if and only if your mind is free. Second part, Q such that for you to get an A grade it is necessary and sufficient that you do all the homework regularly. इसका आंसर क्या होगा? You get a A grade if and only if you do all the homework regularly. Third part, are such that if a quadrilateral is equiangular then it is a rectangle, and if quadrilateral is a rectangle then it is equiangular. अब इसको कैसे लिखेंगे? A quadrilateral is equiangular if and only if it is a rectangle. Now come to the question number 5. Given below are two statements. P such that 25 is a multiple of 5. Q 25 is a multiple of 8. Write the compound statement connecting these two statements with and or. In both the cases, check the validity of the compound statement. Compound statement देखिए, first 25 is a multiple of 5 and 8. 25 is a multiple of 5, true. P is true. 25 is not a multiple of 8, Q is false. Now, first 25 is a multiple of 5 and 8 is and 8. देखिए दोनों का मिलाकर के जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है 25 is a multiple of 5 and 8 is false statement. Now come to the second part of it. Compound statement with or is 25 is a multiple of 5 or 8. अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया. P is true, Q is false. This implies that this is true statement. जब हम R से कनेक्टेड किए, कनेक्टिव R है, उस समय पूरा स्टेटमेंट ट्रू है. और जब एंड लगा करके हमने किया था, देखिए प्रीवियस केस में भी P was true, Q was false. Here also, but कनेक्टिव R आ जाने से पूरा स्टेटमेंट का रूप बदल गया, पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया. ये P ट्रू है, Q फॉल्स है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Check the validity of the statement given below by the method given against it.
ये फर्स्ट है पार्ट, P such that the sum of an irrational number and a rational number is irrational by contradiction method। अब हमारे को contradiction method से हमें प्रूव करना है कि sum of irrational number and rational number is irrational। Let a plus root b be the sum of rational and irrational, where a is rational and root b is irrational। Assume that a plus root b is a rational number। हमने assume कर लिया, ये contradict है, जब है तो वो irrational, लेकिन हमने क्या किया, चलो इसको हम मान कर चलते हैं rational है। So therefore a plus root b is equal to p by q। जब रेशनल मान लिया तो इट शुड बी इक्वल टू पी बाई क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट पी बाई क्यू माइनस ए इज इक्वल टू रूट बी। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख दिया है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, दैट इज इक्वल टू इरेशनल। इसका मतलब जो इरेशनल है दैट इज इक्वल टू रेशनल। देखिए पी बाई क्यू माइनस ए इज अ रेशनल नंबर। This implies that root b is a rational number, whereas root b is irrational, already given. Hence, we arrive to the wrong conclusion because we have proceeded with the wrong assumption. Therefore, sum of rational and irrational will be irrational only. इन कंट्राडिक्ट लेकर चले थे, कंक्लूजन हमारा गलत निकला। Therefore, दिए हुआ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, क्यू सच दैट इफ n इज ए रियल नंबर विथ n इज ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 बाय कंट्राडिक्शन मेथड। हमारे को कंट्राडिक्शन मेथड लेना, कंट्राडिक्शन लेना है, मतलब जैसे n इज ग्रेटर देन 3, इसका उल्टा क्या होगा, n इज लेस देन 3। Let us assume that n is less than 3, क्योंकि कंट्राडिक्ट लेना है हमारे को। That is n is less than 3। Now squaring both sides, we have n square is less than 9। We arrive at a wrong conclusion, n square is less than 9, because our wrong assumption, ये हमने ऐसे wrong कंक्लूजन पर क्यों पहुंचा, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट n इज ग्रेटर देन 3। दिस इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज conveying the same meaning। P, if a triangle is equiangular then it is an obtuse angle triangle। अब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हमें 5 डिफरेंट वे से लिखना है या बोलना है। If all angles of a triangle are equal then the triangle is obtuse angle triangle। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पर आइए, if the triangle is obtuse angle triangle then its all angles are equal। Third, for a triangle to be obtuse angle triangle it is necessary that its angles should be equal। If the angles of a triangle are equiangular it implies that the triangle is obtuse angle triangle। फिर देखिए, इफ ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। So in this way the miscellaneous exercise on chapters 14 is over. That's all.